Mr. Muhammad Yunus, a postman who is now a resident of UK for over 40 years and enjoying a safe and healthy life. Once was a part of same environment as he had lost his own due to the same health conditions. Led him to take stand and built the Alma B Trust Hospital, named after his late mother who died of leukemia in 1980. He formed a firm resolution to build a free hospital for the people of this region, with practically no experience of medical or fundraising. He, remarkably, after 12 years of tireless campaigning, was successful by finally giving a true meaning to his dream by building the hospital, which was completed in April 2007. The original design for the small 1-acre facility providing for basic emergency treatment and non-emergency day surgery. However, as the project evolved with funds and interest in the region, grown expensively, the remits of the hospital grew with it. Eventually, it became clear that it was possible to provide a major healthcare facility capable of delivering world-class treatment to the entire district. Completed in April 2007, the Alma B Trust Hospital is now a major landmark in the district. Comprising 75 inpatient beds, it now has the potential to deliver world-class maternity, pediatric and general healthcare facilities to a population who barely had access to aspirin. The building itself is constructed to the highest standards, as well as a commitment to health staff trained to Western standards. Trust also needed to ensure that the drugs it could provide were of an equally high and effective standards. In November 2007, the hospital opened its doors for the first time. It was able to host a week-long eye camp. Catering to more than 1,400 people, a specialist surgeon flew in for an extensive 8-day period treating a large number of people suffering with eye complaints. As a way of announcing itself in the area, this event was more than a success. In fact, vastly treating around 800 patients with cataract and other curable eye conditions. Health issues realizing that this was perhaps the only way they would get treatment, this demonstrated for better than words. मेरा नाम डॉक्टर नूर रेहान है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इधर आलमा बी हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। यहाँ पे 3 फिजिशियंस हैं, एक पीडियाट्रिशियन है और गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो मैं हूँ। पैरामेडिकल स्टाफ भी अवेलेबल है। जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ मैंने ये देखा है कि इन लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये हॉस्पिटल, क्योंकि बाकी पेरिफेरीज में दाई अवेलेबल होती हैं, यहाँ पे कोई दाई सिस्टम भी ऐसा सच नहीं है। मतलब इतनी डार्कनेस है यहाँ पे। लोगों के पास क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कमी है और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ मुआशी मसाइल, और उसमें ये होता था कि पहले अगर कोई लोग यहाँ पे सोचते भी थे कि अब जो है ख़तरात, इंसानी जान को ख़तरा है, यहाँ से निकलना चाहिए, आगे किसी बड़े शहर में पहुँचना चाहिए, तो उसको कम से कम 4 से 6 घंटे पहुँचने में लगने हैं एक मरीज़ को यहाँ से, चाहे ट्रांसपोर्ट उनके पास एक रेड़ा या कोई भी चीज़ हो, तो 4 से 6 घंटे इंसानी जान के लिए बड़ी मानी रखते हैं। उसमें फिर ये होता था कि बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात जो कि मैंने खुद भी देखा है, मैंने खुद यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है कि जाते जाते रास्ते में ही फौतगी हो जानी, मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठता था। अब उन चीज़ों में बहुत कमी आ गई है। उनके लिए वाकई ये हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी नेमत है। उन गरीबों के लिए जो कि जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, वो क्या सोच सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए भी पैसा चाहिए, इलाज के लिए भी पैसा चाहिए, फ़ीसों के लिए भी पैसा चाहिए, घर से बाहर निकलने के लिए पैसे के बगैर वो सोच भी नहीं सकते हैं। और वो सारी सहूलियात उनको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। हर किस्म की सहूलत उनको मुहैया है। Free medical treatment is almost unheard of, and even paid for treatment is many miles away. The result is some alarming health statistics. For every 1,000 children born in the UK, 5 will die at birth, and just 6 will die before reaching the age of 5. In Pakistan, 53 children die at birth and 100 will die before the age of 5. Of these deaths, just 3.1% caused by diarrhea or respiratory infections. In UK, with the fast access to the doctors, we often think of diarrhea as a worrying but minor complaint. In Pakistan, without access to basic treatment, 1/3 of childhood mortality below the age of 5 is caused by this common class of illness. In the UK, 1 in every 10,000 births result in the death of the mother. In Pakistan, it is 1 in every 200. Life expectancies
At birth, 78.9 years in UK, which is 61.5 in Pakistan. Polio has been eradicated in UK, but in Pakistan, 4 of every 100 children still contract this debilitating disease. In the UK, fewer than 3 in 10,000 deaths are caused by physical injury. In Pakistan, it's 100 and other symptoms of poor access to fortunate medical treatment. It's worth nothing that these statistics are gathered mostly from urban communities in Pakistan. The figures for rural community like Hafizabad are less well measured but known to be much worse. میرا نام ڈاکٹر صغیر حسین ہے. میں عالمہ بی میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں. میں یہاں پہ ہفتے میں 6 دن کام کرتا ہوں. یہ ڈسٹرکٹ حافظ آباد میں اپنی نوعیت کا ایک واحد ایسا ہاسپٹل ہے جو مکمل طور پر مریضوں کو مفت ادویات فراہم کر رہا ہے. پچھلے چند دنوں میں ہمارے پاس کافی زیادہ اور کافی شدید قسم کے اس کے دست کے اور ہیضے کے مریض آئے ہیں جن کو ہم نے بر وقت علاج فراہم کر کے اللہ کے حکم سے ان کی زندگی کو سیو کیا ہے. ابھی جس طرح سے ہم یہ ہاسپٹل بنا ہے, ECG, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر اور دوسری تمام